Good morning, everybody. Good morning to all my dear student of class 11th science. Welcome once again. एक बार आ जाओ भाई फिर से स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री की लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में. Okay, so everybody please join fast. Already I have shared the link to you in your WhatsApp group. Just click on that and join the class. Okay, so now my dears, what we have to discuss today in our lecture number 11 of the chemical thermodynamics. Okay, if you remember my dear, till yesterday what the topic we discussed about the enthalpy, Hess law. Okay, all those things already we people had discussed, and yesterday the main topic we discussed that was the bond enthalpy. Okay, now if you remember that yesterday when I was going to just wind up my session, then we were in the limitation of the first law of thermodynamics. Okay, we were dealing with the limitation of the first law of thermodynamics, and what was the limitation? The limitation was that is it okay that for the isolated system energy will always be constant, understood? But as per the first law of the thermodynamics, it was not any point regarding the spontaneity or the feasibility of the process. आप कोई भी प्रोसेस अगर करते हो तो वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं था on the behalf of first law of thermodynamics. Okay, now so that already we people had discussed yesterday. So now today what we are going to discuss, a very much important topic. ठीक है, क्योंकि याद रखो अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन क्या है, तो limitation of the first law of the thermodynamics is that with the help of this law, spontaneity or the feasibility of the process cannot be explained. क्या मतलब था feasibility या spontaneity का? मैंने बताया था the process which can take by itself. A very basic example I am giving to you. ठीक, आप बोलते हो sun rises in the east. Sun rises जो हुआ है, ठीक है, या सनसेट हुआ है, ये हम और आप तो नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज जो सन ईस्ट से निकला है उसको घुमा के कल वेस्ट में कर दिया, या सनसेट अगर वेस्ट में हुआ है तो उसको हमने नॉर्थ में कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते. इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है? इटसेल्फ, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है ना, अपने आप हो रहा है. So these type of the processes are called as the spontaneous process, and the non-spontaneous processes are those which cannot be take place by itself. Some external work, some external energy, some external factor is required to complete. ठीक, जैसे एग्जांपल बताओ. फिलहाल आज का जो हेडिंग पढ़ने जा रहा हूं वो क्या है? हेडिंग इज spontaneous and non spontaneous process. Okay, spontaneous and non spontaneous process. This part now we are going to discuss. Okay, spontaneous and the non-spontaneous process, this heading we are going to discuss there. अब है क्या important बात? ठीक, क्यों ये पढ़ रहे हो आप? आपको पता है because this is the limitation of the first law of thermodynamics. ठीक है, तो उसको हटने के लिए अपन ये चीज लेके जा रहे हैं. Now, so what we have to discuss, चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. I hope आपको समझ में आएगा. ठीक है, suppose I am writing over here dissolution of sugar in water, dissolution of sugar in water at room temperature. Okay, suppose this particular example I am writing, and second time I am writing that burning a piece of coal. Burning a piece of coal. Okay, for example, these two example I just gave to you. ये मैंने कहा सामने दो एग्जांपल हैं. ठीक, now please pay attention, is a very much important part. बड़ी मजेदार सी चीज है. किसी भी टॉपिक का अगर आप स्टार्ट अच्छा पकड़ते हो तो अंत भी अच्छा होता है. ठीक है, चलो. So dissolution of the sugar into the water. ठीक है, एक कमरे में आप यहाँ पर आए, पानी लिया, थोड़ा सा शक्कर उसमें डाल दी. एक बात बताओ, out of these two process, in which process we require external energy? Anybody can text.
out of these two process, which process can take by itself and in which process we require some external energy. Okay, so Anam Kadri wrote, very good Anam, shabash. Mayur also wrote the answer, it is the B, very good. So B is the option, क्योंकि आपको पता है कोयले का टुकड़ा अगर जला रहे हो तो वो अपने आप नहीं जलेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जलाना पड़ेगा उसको. It means some external energy is required. ठीक, so what we can say that in this B part, ये जो B वाला part है, ठीक, ये जो B part है, it's the which type of the process? It will follow the non-spontaneous process. It is a non-spontaneous process. Okay, yes, very good, shabash. बहुत बढ़िया सीमन and Vineet also. ठीक, and what about this first part? Dissolution of the sugar into the water. obvious सी बात है यार, थोड़ा सा शक्कर अगर पानी में डाल दिया तो अपने आप देखो धीरे धीरे घुलता चला जाता है. इसका मतलब क्या है? Itself, ये अपने आप होगा, by itself it will take place. It means it is the which type of the process? It is the spontaneous process. Take, it is a spontaneous process. So that is the basic thing. So what we can say that the process which will take place by itself is called as the spontaneous, and the process in which some external energy is required is called as the non-spontaneous process. So this is the main introduction of our that particular heading that what we have to going to discuss. Okay, so is it okay to everybody? Is it okay to everybody that introduction? What is the meaning? So what we can say that the process which will take place by itself are called as the spontaneous, and the process which cannot be take place by itself, which requires some external energy, are called as the non-spontaneous process. Okay, is it okay to everybody? Is the introduction okay to everybody? Please text me. Okay, good Bhushan, so much. What about others? Very nice. Yeah, very good. Yesterday, one thing I told you, very good Anam. Anam को याद है और Anam से मुझे भी याद आ गया. Yesterday, one thing I told you कि while responding, you can give the thumbnail sign. It will save your time. Good. Shabash. Very nice. So now, आप पढ़ क्या रहे हो केमिस्ट्री में? थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप याद करो, जब हम लोगों ने चैप्टर का स्टार्टअप किया था, when we start our particular chapter, so I think you remember that the thermodynamics chapter can be discussed with the help of the different state functions. हर बार हमें अलग-अलग state functions पढ़ने पड़ते हैं. अब spontaneity की बात आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई state function बनना पड़ेगा, है ना, जिससे अपने को पता चलेगा कि कब वो spontaneous है, कब वो non spontaneous है. ठीक है ना? So that is the basic thing. So now we have to discuss one state function which is called as the entropy. यहाँ पर एक नया स्टेट फंक्शन आएगा जिसे हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, and that state function will predict to us that the process is the spontaneous or the non-spontaneous. Okay, so that is a very much important part. Okay, so now we have to discuss entropy and entropy change. Entropy and entropy change. Okay, just like what the state function we discussed the last 2-3 days, which state function we are discussing? We were discussing about the enthalpy change. अभी लेटेस्ट में आपने जो 2-3 दिन से पढ़ रहे थे यार, वो enthalpy था. Enthalpy भी हमारा वो state function था जहां से हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी. So like that, now we are going to discuss the different state function, which is the entropy and the entropy change. Okay, Shubham, good morning, dear. But Shubham, I think you joined late, dear. है ना? You joined late. Okay, so now entropy and the entropy change. So this is the S and this is called as the delta S. Okay, so entropy presented by the S. जो हमारा entropy है उसको S letter से present करते हैं. Like that, the enthalpy will be presented by which letter? H. Internal energy presented by which letter? U. So like that, entropy can be presented by the letter S. So it is the S and the delta S. And this is the state function. Anybody can text me. Anybody can text. What do you mean by the state function? Can anybody text? Anybody can text me. What do you mean by the state function? छोटा सा एक लाइन है लिख सकते हो आप. उससे बड़े-बड़े मैसेज आप टाइप कर देते हो तो ये तो लाइन है छोटी सी.
ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट फंक्शन? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट? क्या मतलब हुआ भाई स्टेट फंक्शन का? फिर अपन आगे आते हैं एंट्रोपी पे। कैन एनीबॉडी टेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेट फंक्शन? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये थर्मोडायनेमिक्स का, पूरा चैप्टर ही इसी वर्ड पे चल रहा है, स्टेट फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई द एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, तो यू मस्ट नो दैट कि what is the meaning of the state function. Yes, very good. So Nidhi and Tanvi came up with the answer and they wrote it depends upon the initial and the final state, not the process. Very good. Quantity depend upon the initial and final state. Very good, Patel. And Kalyani also. Very nice. So the 4 students gave me the answer and all 4 gave the right answer. Ki what is the state function? Okay. Shimant, it is not energy, my dear. It's the state. Okay, Shimant. So please correct your answer. Please don't write the energy. You please just wrote there state. The state is there. So what you can say about the state function? The state functions are those which depends upon their initial and the final state, but do not depend upon the change of the process. कैसे हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या इनिशियल था क्या फाइनल था, वो हमारा स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, so that is a very much important part. Now, तो साहब ये तो हमारा हो गया एंट्रोपी। अब ये होता क्या है देखो। So what is the entropy? It is the degree of disorder. It is a degree of the disorderness or randomness. Okay, it is the degree of the randomness or the disorderness. ठीक है ना, मतलब कहने का क्या हुआ कि एंट्रोपी वही ज्यादा होगी जहां पर कोई भी प्रोसेस जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड वे में होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस में होगा। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द डिसऑर्डरनेस और द रैंडमनेस एंड इट इज नोन एज द एंट्रोपी। जैसे चलो एक बहुत मैं बेहतरीन छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि आउट ऑफ द गैसियस स्टेट, liquid state and the solid state, can anybody text me out of these 3 states in which states the particles are very much closely packed? बहुत छोटा सा पूछा है जो 8th 9th से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। Anybody can text out of gaseous state, liquid state and the solid state, in which state particles are the closely packed? Okay, Kalyani gave the answer, Mayur also gave, very good, Bhushan, Shiman, Anam, and all are writing about the solid state and you are absolutely right. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड स्नेहा, शुभम एंड तन्वी आल्सो। ठीक, इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड हुए ना। अगर ये सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो एक क्वेश्चन और बताओ, फिर कौन से स्टेट के पार्टिकल सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड हैं? कैन यू टेक्स्ट मी? आई होप आप समझ गए हो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। सो आउट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट, in which state the particles are very much ordered way, in which the particles are the very much ordered way and in which particles are the very less ordered way? कैसे बताओगे? Out of solid, liquid and the gas, in which state the particles are the very much in a ordered way and in which state particles are in a very less ordered way? Yes, very good, शाबाश शुभम, बहुत बढ़िया यादव जी, शानदार आंसर लिखा है आपने। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट जो ऑर्डरनेस है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि आउट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना, ये आप पढ़ रहे थे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड द गैसेस। ओके, सो आउट ऑफ दीस 3 स्टेट्स जो सॉलिड्स है इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, मोस्टली ऑर्डर्ड, सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड वे में रखे होंगे। ठीक, और ये सबसे ज्यादा लेस ऑर्डर्ड या वीकली ऑर्डर। तो व्हाट वी कैन से दैट, तो आप बता सकते हो एंट्रोपी out of the solid, liquid and gas in which entropy will be maximum. Out of the solid, liquid and the gases for which entropy will be maximum. Solid, liquid, gas में सबसे ज्यादा entropy किसका होगा? Okay, very good, शाबाश।
So Anand, Kalyani, Shimant, Mayur, Bhushan, Subham, very good. Prakhar, Sash. यार एक बात बताओ, एक बड़ी परेशानी है पिछले कुछ दिनों से। हालांकि अपने स्कूल में कल ही एक और भी एडमिशन हुआ है। Yesterday one more new student joined. Okay, I don't know she is in our lecture right now or not. If Sanskriti, are you with us? Sanskriti Manghare, I'm not clear with that name, but I think Sanskriti is the name. She is from Nagpur, I hope so. So she also joined our school yesterday. She is in class 11 science. So are you with us, Sanskriti? If you are with us, you can text. Okay. So now the total number of the students are 28. But do you believe that only 15 to 16 students are right now in the live streaming class? Might be due to the net connectivity issue or their own issue, है ना? मन है तो देख लिया, मन है तो नहीं देखा। बट आज ध्यान से पढ़ना, मैं आपके लेक्चर के लास्ट पे आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग टू योर सेकेंड ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, चलो तो बने रहो साथ में, बाद में बात करेंगे लास्ट में। Now, so what we can say that the entropy for the gaseous will be maximum, then liquids, then solids. Okay, so this is the order of the entropy. This is the order of the entropy. The gaseous are the maximum, then liquids, then the solids are. So I hope is it okay to everybody? What is the meaning of the entropy and the entropy change? Entropy is the degree of the randomness और द डिग्री ऑफ द डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगा, जितना ज्यादा ऑर्डर्ड वे में कोई प्रोसेस होगा उतना ही एंट्रोपी कम होगा। सो दैट इज द बेसिक थिंग। मैंने आपसे बोला कि सपोज इस पैसेज पे मैं टहल टहल के बढ़ा रहा हूं, ठीक, अभी यहाँ पर क्या है, कोई भी सीट, कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, बट सपोज अगर यहाँ बीच में खूब सारी चेयर डाल दूं और फिर मुझे ऐसे टहलना होगा तो आपको पता है मुझे प्रॉब्लम आएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। ठीक है, कहीं पर फांद के जाना पड़ेगा, कहीं पे क्रॉस करके जाना पड़ेगा, कहीं पीछे से जाना पड़ेगा, ऑर्डरनेस कम हो जाएगा, तो एंट्रोपी विल बी मोर। और अभी क्या है, पूरा पैसेज एकदम क्लियर है, सो व्हाट डू यू कैन से, इट्स अ वेरी मच ऑर्डर्ड वे, सो एंट्रोपी इज द लेस। Okay, so that is the meaning of the entropy. So what we can say, what is the entropy? Entropy is that state function which discuss about the spontaneity and the non-spontaneity. ठीक है, तो वो कैसे होगा वो भी अपन पढ़ेंगे, बट इसके पहले अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एंट्रोपी चेंज। सो प्लीज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू विल डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी चेंज व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस, इसको अपन डेल्टा एस से प्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एंट्रोपी चेंज? द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू Q reversible upon temperature. Upon temperature. This is the formula of the entropy change. So delta S is equal to Q upon T. तो जो Q हो गया वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक, तो दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज। अब ये डेल्टा S समझ रहे हो ना, ये पूरा S टोटल है। S टोटल का मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज देयर। So that is the formula to find out the entropy of the particular process. ये हमारा एंट्रोपी का मतलब होता है। ठीक है, तो ये याद रखो, ये हमारा एंट्रोपी का मतलब हो गया। तो प्लीज रिमेंबर दैट, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, तो सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। So that is the way to find out the entropy change. Delta S is equal to Q upon T is there. अच्छा एक बात बताओ, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी, बहुत बढ़िया सवाल मेरे दिमाग में आया और आप भी शेयर कर रहा हूं। एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। व्हाट यू विल से? एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट यू विल से? इट इज द एक्सटेंसिव और द इंटेंसिव। आपने पढ़ा है, याद रखो। Anybody can text? It is the extensive property or the intensive. Nidhi Sharma wrote the answer. What about others? Okay.
Oh, sorry, my dear, all the students are writing wrong. Entropy is the extensive property. Yes, very good. Kalyani wrote the right answer. Shabash, Kalyani. Out of so many students, only Kalyani gave the, and Shubham Yadav also gave the right answer. Entropy is the extensive, जो डिपेंड करती है बेटा. एंट्रोपी तो डिपेंड करेगी ना फैक्टर, क्योंकि हीट भी आ गया उसमें, टेम्परेचर भी आ गया, तो जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. प्लीज रिमेंबर दैट. वेरी गुड. So what we can say that the entropy change to delta S है, it is the extensive property, है ना, जो मैटर पे मास पे डिपेंड करेगी. It is the extensive property, it is not the intensive property. ठीक है ना, it is the extensive properties is there. Okay, so that is a very much important part. बहुत important question था ये. ठीक. Now after that अब अभी क्या होगा देखो, जैसे मैंने यहां पर Q लिख दिया, जैसे मैंने Q लिख दिया. इफ यू रिमेंबर दैट माय डियर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथैल्पीज, ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ द एंट्रोपी भी होगा. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूजन, क्योंकि स्टेट बदल रहा है ना. सपोज आई एम सेइंग द वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन अगर होगा तो वहां लिक्विड से गैस बनेगा, मतलब वहां पे स्टेट बदल रहा है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मतलब वहां पर एंट्रोपी आएगा. तो होगा क्या, ये जो आप Q लिखते हो ना, वो प्रोसेस के हिसाब से बदल जाएगा. जैसे सपोज एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन, सो एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर. एंट्रोपी ऑफ द वेपराइजेशन, सो एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर. सो बेस्ड ऑन दैट द फार्मूला विल बी डिफरेंट. प्लीज रिमेंबर दैट, इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखना, बहुत काम की चीज है. मैं लिख देता हूं क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि लाइक दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथैल्पीज, द एंट्रोपी आल्सो हैविंग अ डिफरेंट टाइप. Okay, so as per the type of the entropy you will take that enthalpy. Means if you are talking about the vaporization, अब अगर आपने वेपराइजेशन कर दिया तो वहां पे हीट कौन सा होगा, that is the enthalpy of the vaporization only. ठीक. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन तो सॉलिड से गैस बन गया, तो वहां पर भी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ गया. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल यूज द फॉर्मूला. मतलब जैसे सपोज आई एम सेइंग दैट, मैंने यहां लिखा डेल्टा SUBS. What is the meaning of this mean? It means that entropy change of the sublimation. ये sublimation का प्रोसेस है. तो अगर ये sublimation का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, डेल्टा, ये भी sublimation होगा तो यहाँ H हो जाएगा अपॉन टेम्परेचर इज देयर. ठीक. तो change in enthalpy of the sublimation upon temperature. Like that, suppose I am saying that you are talking about the entropy of the vaporization. So based on that you will take the enthalpy of the vaporization upon temperature. ठीक है. Suppose I am saying that fusion of the entropy, तो इसके हिसाब से ये भी हो जाएगा enthalpy of the fusion upon temperature. Because in all the three states, what we can say that in all the three cases, states are going to change. States बदल रही है. ठीक है ना. सब्लिमेशन की बात कर रहे हो तो वहां सॉलिड से सीधे गैस बन रहा है. वेपराइजेशन की बात कर रहे हो, ठीक, तो लिक्विड से गैस बन रहा है. ठीक. फ्यूजन की बात अगर कर रहे हो तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है. So what we can say that in all the three process, in all the three cases, states are going to change. Okay, and when the states are going to change, what will happen? Degree of randomness will also be changed. So anybody can text out of these three process, out of these three cases, in which case entropy will be maximum, or in which case degree of disorderness will be maximum. Can you text? इन तीनों केसेस में किस केस में सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा? Can you text me? Anybody can text out of these three cases, in which case degree of disorderness will be maximum. Okay, so आशुतोष, कल्याणी, अनंत, शुभम, निधि, मयूर, इन बच्चों ने जवाब दिए हैं. ओके, सो नाउ माय डियर, एनीबॉडी एल्स, और भी कोई है क्या आंसर लिखने वाला? You please remember that in this it is the maximum. The first part is the right answer, my dear. पहला पार्ट बिल्कुल सही होगा. क्यों? यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा है. पहले सॉलिड से लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से गैस होगा, तो दो बार पार्टिकल्स का स्टेट बदलेगा, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगा. सो इन विच प्रोसेस डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस विल बी मोर? फ्रॉम सब्लिमेशन. इन द सब्लिमेशन प्रोसेस, फ्रॉम सॉलिड टू गैस.
है ना, क्योंकि यहां पर तो एक ही स्टेप ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये एक स्टेप चेंज है, ये भी एक स्टेप चेंज है, बट ये दो स्टेप चेंज, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस विल बी मोर. ओके, सो निधि, मयूर, भूषण, देन कल्याणी, इज इट ओके टू यू? Mayur, Nidhi, Bhushan and Kalyani, is it okay to you that in the first process disorderness will be maximum? Is it okay? Very good Kalyani, शाबाश. ठीक है, ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया. शाबाश. नाउ सो आफ्टर दैट अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व कर लो एंड देन आई विल फाइंड आउट माय टुडेस सेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन. And what is the question? Now you have to text me in which of the process entropy will be increases or the decreases. मैं आपको 4 cases दे रहा हूँ and you have to explain me in which case entropy increases or the decreases. ये आपको बताना है ना? मतलब क्वेश्चन क्या हुआ? Which of the following entropy, मतलब जिसको आपने S बोला है, increases or decreases. ठीक है ना? In which of the process entropy increases or the decreases? Okay. So now what is that? 4 cases are there. And now my dear, I am asking to you NCERT question. ये आपका NCERT question है, आप देख भी सकते हो. If you are having the NCERT book, you can say that it is an NCERT example. NCERT का एग्जांपल, यू आर हैविंग द NCERT, यू कैन आल्सो गो थ्रू दैट. आप लिख सकते हो, देख सकते हो. पहला है a liquid crystallizes into solid. A liquid crystallizes into the solid, the first process. The second one, temperature of the crystalline solid, temperature of crystalline solid increases from 0 Kelvin to 111 Kelvin. 0 Kelvin to 15 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 15 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं. 115 Kelvin. थर्ड पार्ट इज एक केमिकल रिएक्शन है, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड, और जब डिकम्पोजिशन किया है तो मिला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O मतलब लिक्विड. ठीक है, ये सब हमारा थर्ड पार्ट. अच्छा, H2O भी वेपर के फॉर्म में मिला है, तो वाटर वेपर मिला है, मतलब गैसियस. एंड द फोर्थ पार्ट इज H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करके हाइड्रोजन का एटम बनाया है 2AH. इट इज आल्सो इन द गैसियस फेज. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन माय डियर. These are the 4 processes are given. You have to text me in which of the process entropy will increase or the decrease. Think properly and then please text your answer. And I want answer from all the students, please. Everybody, please text me. You have to text that in which of the process entropy increases and in which of the process entropy decreases. ये अपने को बताना है. Okay, please text me fast. Okay. All the students, please make it fast. Because I think at 10 or 10:15 you are having a different class. So till that time, make it fast. Okay. So first answer I got from the Anam. Very good, Anam.
आई अप्रिशिएट योर पार्ट, शाबाश, तुमने सबसे पहले आंसर दिया। ओके, सो लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू द, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? एक दो आंसर और आ जाए दो अमन, ओके आनंद? Let 1-2 more answers should come, then I will discuss, है ना? Just wait for 1 or 2 minutes. Okay, what about other student? Make it fast. Okay, Tanvi also gave the answer. Very good, Tanvi. Make it fast, all the student. Arya Singh. आर्या सिंह का तो मैं 10 बार नाम बोल रहा हूं भाई, बट फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। आर्या, आर यू ऑनलाइन? निधि, प्रखर, कल्याणी, विनीत, भूषण। ओके, निधि ने तो सुन लिया भाई, निधि ने भी आंसर दे दिया। 3 स्टूडेंट गिव द आंसर। वेरी गुड कल्याणी, शाबाश। 4, आई गॉट द आंसर फ्रॉम द 4 स्टूडेंट्स ओनली। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, शुभम 5, I got the answer from the 5 student. और जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। वेरी गुड मयूर, I also got the answer from मयूर। आशुतोष सिंह, बहुत बढ़िया। चलो, अब तो एक कंपेरेटिवली 5-6 आंसर आ गए हैं। प्रखर का भी आंसर आ गया। वेरी गुड प्रखर। सो आई थिंक नाउ वी कैन डिस्कस। चलो, अब डिस्कस करो। A liquid crystallizes, है ना? A liquid crystallizes into the solid. तो जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो विच प्रोसेस? फ्रीजिंग, फ्रीज हो रहा है। और अगर फ्रीज होगा तो क्या होगा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस तो घट जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर है, सॉलिड के पार्टिकल पास पास है, ऑर्डर कम ज्यादा हो गए, ज्यादा ऑर्डर्ड हो गए। ओके, वेरी गुड। विनीत, भूषण एंड श्रीमंत आल्सो गिव द आंसर। So what we can say in the first process, it is that decreases. In the first process, entropy decreases. Very good. So the student who wrote the answer decreases, they are absolutely right. बिल्कुल सही। तो सब पहला पार्ट तो हो गया। यहाँ पर एंट्रोपी घटेगी। चलो दूसरे प्रोसेस में आ जाओ। 0 केल्विन टू 115 केल्विन, टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, और अगर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज़ डिग्री ऑफ द रैंडमनेस विल आल्सो बी इंक्रीजेस। सो व्हाट विल हैपन अबाउट द एंट्रोपी? हियर इट विल इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगा। ओके, सो द स्टूडेंट हु रोट, यू कैन चेक, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रोट द राइट आंसर। लोग सभी का आंसर सही भी है। नाउ द थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट में क्या है यार? ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, जबकि आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वहां पे गैसियस स्टेट भी है। देखो, एक सॉलिड है, 2 गैसेस हैं। सो द 2 गैसियस प्रोडक्ट एंड 1 द सॉलिड प्रोडक्ट। सो व्हाट विल हैपन? एंट्रोपी विल इंक्रीज, क्योंकि गैसियस के प्रोडक्ट मिल गए तो रैंडमनेस बढ़ गया। तो व्हाट विल हैपन इन द थर्ड वन? इन द थर्ड, एंट्रोपी अगेन इंक्रीजेस, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन इन द फोर्थ वन? H2 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन एटम है। तो व्हाट वी कैन से दैट इन दिस वे, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके दोनों एटम क्लोजली पैक्ड हैं और ये एटम अलग अलग हो गए। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द फोर्थ प्रोसेस? इन द फोर्थ प्रोसेस द एंट्रोपी विल आल्सो बी इंक्रीजेस, है ना? हमारे फोर्थ प्रोसेस में भी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज इन दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन? डिग्री ऑफ रैंडमनेस विल इंक्रीज। ये पार्टिकल पास पास है, ये दूर दूर जा रहा है, आपने बॉन्ड तोड़ दिया है। तो व्हाट विल हैपन इन द फोर्थ प्रोसेस? अगेन इन द फोर्थ प्रोसेस एंट्रोपी विल इंक्रीज। हमारे फोर्थ प्रोसेस में भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। Okay, so this is overall the concept. So now what we discussed today, we discussed that दो चीजें आपने पढ़ी हैं basically. The first part we discussed what is the meaning of the spontaneous and the non-spontaneous process. Why? Because that was the limitation of the first law of thermodynamics. Okay, so first of all we discussed what is the entropy, है ना? Then how we have to find the that the process is the spontaneous or the non-spontaneous, and then degree of randomness when it will increase and when it will decrease. टुमारो क्लास, कल की क्लास में क्या पढ़ोगे आप? कल के में पढ़ोगे स्पॉन्टेनिटी भी चेक करना अपने को सीखना है। अभी तो आपने केवल ये पढ़ा है कि एंट्रोपी कब ज्यादा है कब घट रही है, बट वी हैव टू बेसिकली डिस्कस द डेल्टा एस। अपने को तो एस टोटल चाहिए ना, सिस्टम की भी एंट्रोपी चाहिए और सराउंडिंग का भी चाहिए, दोनों को ऐड करना होगा और फिर बताना होगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ।
ठीक, तो वो बात अपन कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। And now some very much important instruction, important information I have to share with you as a class teacher as well as your chemistry subject teacher. Now my dear, your second online assessment is going to start from 23rd of November. Please remember that. Second online assessment जो है आपका वो 23rd नवंबर से है, 23rd to 30th नवंबर आपको डेट शीट मिल जाएगी। ठीक, what will happen this time? This time we are just going to change the mode of the assessment. This time you will or we will conduct our second online assessment through Google Classroom, not the WhatsApp way. जैसे आपने पिछली बार भेजा था ना, अपने फोटोज खींच ली, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और फिर टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया। This time it will not happen. This time your second online assessment will be conduct through the Google Classroom app. आपको अपना पेपर मिलेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉल्व करना होगा और फिर आपको Google Classroom में उसको डालना होगा। कोई भी एंट्री अगर इसके अलावा आएगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक, थर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट, this time your paper will be 40 marks. For 11th and 12th our paper will be the 40 marks. 40 नंबर का पेपर होगा जिसमें 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 25 मार्क्स सब्जेक्टिव होंगे। पिछली बार क्या था, 15 ऑब्जेक्टिव 15 सब्जेक्टिव, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सब्जेक्टिव पार्ट। 15 marks of the objective and 25 marks of the subjective paper will be there. Okay, so please prepare accordingly. आप तैयारी करो उसी हिसाब से, सिलेबस पूरा आएगा। Means this is your 6th chapter right now we are dealing. So the total number of the chapters will be the 6. First online assessment में 4 chapter आए थे, second में 6 आएंगे. You will also get the syllabus for all the subjects. But I am clear telling to you that for 11th and 12th full syllabus will come. What we will discuss by the end of this month. मतलब जो भी जैसा भी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे पूरा सिलेबस आएगा। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूं, the syllabus will come till chemical thermodynamics. 2 more lecture I required for the finishing of this chapter. ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आएगा। Okay, so that's all for today. This part I have to discuss with you. मैंने आपको बता दिया, बाकी भी आपको पूरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेट शीट है ना, जो इंस्ट्रक्शंस एवरीथिंग यू विल गेट, so please prepare accordingly. Okay, so thank you so much dear, goodbye.